As you can see, most of the components are covered in this assembly. So these are the pipe, you can cut it to whatever length you want, and this is hand inserted only. So you can use elbow if you want to have a right bend. If you want to make 3 branches, you can use T. You can connect pipe again elbow and straight, like that. And this is the cock for on and off, and this is how you terminate the pipe at the end side with our clamp. Now here, there is a hole punch given like this. Just pinch it, it will create a hole. Connect that small blue color connector in this, and the other side you can connect the 4 mm pipe. Insert this tack, so this will go into the mud. So you can cut it and make it as per your रिक्वायरमेंट एंड नीड। ये एक छोटा सा डेमो है जिसमें कि आपको सारे कनेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप पाइप आपके हिसाब से आप कटिंग करके ले सकते हैं। अगर आपको 3 लाइन बनाना है तो टी लगाइए, यहाँ पे एक लगा लीजिए, ये सब हाथ से ही कनेक्ट होगा। यहाँ पे पाइप लगा लीजिए, ऐसा एल्बो लगा लीजिए, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगा, यहाँ पे एक लाइन, और इस पाइप को जहाँ से भी एंड करना है उसको आप यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट कर सकते हैं। होल पन से आप होल कीजिए, जो पॉट के पास में है वहाँ पे आप 4 mm का एक कनेक्टर लगाइए, छोटा सा दिया रहता है नीला कलर का, और एक होल पंच भी दिया है उससे, और उसके बाद में 4 mm का पाइप उसमें स्टैक डालिए और उसमें ड्रिपर लगा लीजिए, हो गया। अब आप जैसे चाहिए वैसे, जितना लंबा जैसा चाहिए लेआउटों के हिसाब से कर सकते हैं।